The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only. It is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of a qualified professional for any questions that you may have regarding a special condition or an educational matter. Please do not disregard professional advice or delay in seeking the same because of something you have heard in this podcast. The opinions expressed by the host and guests are solely their own. हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में आज है हमारे साथ आज की हमारे गेस्ट सुप्रिया मैम। आपका स्वागत है मैम द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट में। Thank you. Thanks a lot, Yuvraj. वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। Yes, please. मैम लास्ट टाइम कोविड के पहले मिले थे जब मैं आपकी क्लास में था, तो आप अभी भी टीचिंग कर रही हैं या कुछ और? अब मैं स्कूल में टीचर नहीं हूँ। जब आप मुझे मिले थे तब मैं आपकी क्लास टीचर थी इन श्रीराम स्कूल मॉन्सरी. Now I practice yoga and meditation full time, and I even teach yoga and meditation. Along with that, I am also conducting individual sessions for individuals who are differently able to guide them academically. I'm doing all of that in my own space. Thanks मैम, इट्स ग्रेट एंड इट्स ग्रेट टू नो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How did you choose to have a career in special education? So I became a special educator in the year 2017. I had already started interacting and teaching children with special needs in the year 2016 at the Sri Ram School Montessori. And my interactions with those children made me want to pursue this field further because I realized that the amount of love, pure love, that I got from those students is something that I had never experienced in my career as a teacher, I would say, for the past 10 years. And it just opened something different in my heart, and I knew कि मुझे अब इसी फील्ड में आगे और एक्सप्लोर करना है और जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ करना है टू ईच लाइफ विद लव एंड कंपैशन। एंड उतना ही लव एंड कंपैशन मुझे मिला जिसकी वजह से आई स्टे हियर। Amazing. Let's move on to the next question. स्पेशल नीड्स के बच्चों को अर्ली इयर्स में किस तरह की तैयारी करवानी चाहिए जिससे उनका मिडिल स्कूल के बाद एकेडमिक्स इजी हो? मुझे ऐसे लगता है कि अर्ली इयर्स में एक स्पेशल नीड्स बच्चा जो है उसे एक्सपोजर डेफिनेटली मिलना चाहिए। और थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं क्योंकि वो बच्चा न्यूरोटिपिकल नहीं है, वो थोड़े एडजस्टमेंट इश्यूज दिखाएगा। बट अगर हम सही टाइम पे उसे based on his physical condition, his emotional conditioning can be done. So if the child is physically fit and up to it, maybe enrolling him in some kind of physical activity, sports based, या कहीं पर भी जहाँ वो अपनी बॉडी यूज कर सके, कराटे या योगा और मे बी इवन अ डांस क्लास, उससे क्या होगा, एक उसकी हैबिट चेंजिंग होती रहेगी और उसे कॉन्फिडेंस भी मिलता रहेगा टू कीप ग्रोइंग फर्दर। प्लस थोड़ी थोड़ी सोशल इंटरेक्शन, थोड़ी थोड़ी आउटिंग्स ज़रूर एज पेरेंट्स मुझे लगता है करवानी चाहिए जो हेल्प करेगी फॉर हिम टू फिट इनटू द सोसाइटी। बेसिकली इन शॉर्ट आई वुड से rather than just shutting him indoors in his own world and shutting your own world, take him out, let him explore, and you will also understand with him that where is there that his ability lies. As a parent, as a caregiver, you will also explore the world with the child. ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेटर के तौर पर जो आपकी जर्नी रही है उसमें सबसे फेवरेट पार्ट क्या है आपका? For me, I would repeat again, actually सबसे favorite part ये था कि मेरे जितने भी स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स थे
वो हर मोमेंट इतना मेमोरेबल बना देते थे, चाहे वो एकेडमिक टीचिंग है या अगर हम किसी प्ले या किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हर मोमेंट में एक ऑनेस्टी होती थी, एक जेन्युइन लव होता था। अगर वो थक जाते थे तो वो बोल देते थे थक गए, अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती थी वो बोल देते थे नहीं, rather than going behind my back and talking, it used to all be at to my face. So that purity, that innocence of their conscience, it just touched me very, very deeply always. So I feel that is the best part. It changed me, it made me a better human, and I am sure any one of us who's dealt or closely with an individual with special needs, that person has definitely left a mark in you because their eyes and their soul is just simply pure. They don't know malice. So that has been my best part. एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कब से सोचना शुरू कर देना चाहिए? करियर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में अगर तो बाय द टाइम बच्चा मिडिल स्कूल में है और वो कोई अपना टैलेंट शो कर रहा है, कोई पैशन में बहुत एक्सेल कर रहा है, तो मुझे लगता है तब से पेरेंट्स को चैनलाइज हो जाना चाहिए और मिल के ढूंढना चाहिए विद द एजुकेटर्स, विद द स्कूल, और जहाँ से भी हेल्प मिले कि ये जो एक टैलेंट इस बच्चे का नजर आ रहा है हम इसको कैसे और हॉर्न कर सकते हैं सो दैट ये इसी में कुछ आगे कर जाए। नहीं तो ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स डेफिनेटली डेफिनेटली वो सब एरियाज देखने चाहिए जहाँ आपको लगता है कि आपका बच्चा फिटेड हो। देर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हु आर विलिंग टू हेल्प, lots of individuals who are willing to, who you can reach out to, like parents of ex-students, like educators, who will willingly support you with a lot of information कि आप यहाँ जाइए, यहाँ ये हो रहा है, या there are NGOs who are grooming children to be taken in by the corporates now and do little duties over there. So there's a lot that is available. So I would say that definitely grade 9 onwards, if you haven't started before that, grade 9 onwards, start. Start being a little more vigilant. Reach out to people, as many people. And when you go online, there's a lot of support. Or otherwise, form a very, very strong parent community wherein you can support each other and seek support even from the educators. ग्रेट टू नो। अपने कौन से करियर्स में स्पेशल नीड्स के बच्चों को सक्सीड होते देखा है? Largely मैंने देखा है कि children or individuals with special needs have turned out to be excellent bakers and cooks. They just know how to cook the best things. Musicians, they play instruments very well. One or two of my students have even excelled in golf. They go for international tournaments. There's one who is also a fashion designer, but wholly solely, if I see a large number of them, they are doing extremely well in the hospitality industry, be it cooking, be it the front desk also. So yes, there is no limit. Truly, sky is the limit for them as well. It's just that they have to choose the right hands, and it is our duty as parents and as educators to be able to give them those wings, to be able to help the children find their own calling, and they can do it. एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग एकेडमिक सक्सेस कितनी जरूरी है? मेरे अकॉर्डिंग वैसे ही, चाहे वो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है या चाइल्ड हु इज डिफरेंटली एबल्ड, academic success is not a definite marker for success in the world. ठीक है, एक हद तक ज़रूरी है डिग्रीज होना बिकॉज दैट इज मैंडेटरी, बट उसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल इमोशनली स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंट है तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। जिसको एक भरोसा दिया गया है from his environment, and by environment I mean parents and society, that you are worth it, वो गिर के भी
खड़ा होगा, 10 बार गिर के भी खड़ा होगा और कुछ ना कुछ जरूर बनेगा. तो academics is a part of the journey definitely, but it is not, definitely not the only defining factor. That's so inspiring, man. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताइए जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सके. As a parent, your role in the future or the life of a child becomes very, very crucial. And here again, let's focus on children or individuals with special needs. We have to understand that they are the ones who will not be able to express as beautifully whatever is happening inside them. So it becomes very, very important for you as a parent to carve out definitely, if not more, 15 minutes in a day to connect with your child. Maybe over a walk, maybe over a game, so that through his body language or through little words, you and he form a bond, a little language of your own that is understood. That will give him a safe space to be himself. You will be able to notice a lot in your child. Along with that, that will give him confidence to be his own person in the world. Do make it a point to go out for an outing, a family outing, or maybe with one or two parents, plan out something at least once a week. Take the child out in the nature. Connect with him over nature. Connect with your child over games. You will see so much of him blooming. So I feel that as a parent, हाँ, एक कनेक्शन अपने चाइल्ड के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है. और उस कनेक्शन के थ्रू ही आप देखेंगे कि आपका बच्चा एकेडमिकली भी सेल कर रहा है, स्कूल में भी अच्छी तरह सेल कर रहा है, सोसाइटी में भी अच्छी तरह सेल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके पीछे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल नीड्स के बच्चों में सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आई फील टू, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर दिया था, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली इस स्कूल की बिलीवर हूँ कि इमोशनल सोशल needs are not separate from each other. So, an emotionally balanced child, a child who is confident that he is loved and he is supported, will socially also be very, very well settled. But to do that, it is very important for a parent to find like minded parents and coordinate with them. Take the children out once in 15 days for maybe a physical outing or maybe just a movie. Maybe just sit, draw or paint with them. Along with that, be mindful. हमारे आसपास ना अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है डिफरेंटली एबल्ड पीपल की, बहुत कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. तो कहीं ना कहीं ज़रूर अपने बच्चे को, अगर पार्टिसिपेंट नहीं तो जस्ट गो देयर टू ऑब्जर्व थिंग्स. म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहाँ लेके जाओ. तो जितना एक्सपोजर आप देंगे, जितना उसे सोशली या अलग अलग एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ ज़्यादा खुश था एंड वेयर डिड यू सी हिज इंटरेस्ट लाइक. That will make him also socially very comfortable and not uncomfortable around people, different people, and that will make it easier for him to settle in all kinds of circumstances. Excellent. Let's move on to the last question. आजकल AI और चैट जीपीटी की इतनी बात हो रही है, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट स्पेशल एजुकेशन पर भी होगा? क्या स्पेशल नीड्स के बच्चों की लाइफ इससे आगे इजी होगी? Of course, yes. I strongly believe anyway that technology is the way forward. और जैसे गूगल के आते ही या what is that thing called जिस पे आप बोलते that feature that converts your words into text, yeah, speech into text. Similarly, chat GPT is making, or artificial intelligence is making life so much more simpler. So for an individual with special needs, imagine there is so much that is happening in his mind, which maybe I, as another human being, may not be able to understand.
but how beautifully he can put it across to the world through AI or through ChatGPT and learn so much through there. So yes, definitely that is a step forward and a step in the right direction, an upward step for individuals with special needs. It is definitely helpful. Okay, so thank you, ma'am, for your inspirational answers. It has been an honor talking to you. Thank you, Yuvraj. It is wonderful seeing you grow into such an amazing human being and a boy who came to me in grade 9 and today is sitting here interviewing me. आप It मेरे feels very good. फेवरेट टीचर्स में से एक रहे Thanks. That's a real honor. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट का आज का ये एपिसोड देखने के लिए। और हम फिर मिलेंगे द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक मुझे यानी युवराज को दीजिए इजाजत। गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।